समथिंग इज रॉन्ग। इसे नाउ अगर मैं इसे इस कोड को रन करूंगा, इफ आई रन दिस कोड, सी hi is printed. Now there is in this try block, we have performed some code. Yes, and after that in the catch block, yeah, in the try block I have confirmed some code, and in the catch block what I have cached the exception e. See, ये exceptions लिखना जरूरी है, उसके बाद हम जनरली e लिखते हैं, इस e की जगह पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, तुम वैल्यू भी लिख सकते हो इसकी जगह, e की जगह, इट्स ऑल अप टू यू। ओके, बट जनरली e से ही डिनोट करते हैं हम। ओके, सो एक्सेप्शन ई, एंड आफ्टर दैट अगर कुछ एरर आता है तो हमें, कुछ प्रिंट होके मिलना चाहिए, यानी कि हमें पता चलना चाहिए कि एक्चुअली एरर क्या है, तो हम ही उस एरर को हैंडल कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ओके इन दिस स्पेस देयर इज अ एरर। ओके, एंड आफ्टर दैट दिस इज, एंड अगर मैं इसको रन करता हूँ, आफ्टर दैट सी सिस्टम डॉट आउट डॉट के इज के, एंड आफ्टर दैट आई हैव गिवन बाय आल्सो। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो हाई भी आएगा, समथिंग इज रॉन्ग आएगा। अब जब ये एरर है तो के की वैल्यू ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 0 करके रखा हो, तो ये के इक्वल्स टू 0 आ गया इधर, एंड देन बाय भी प्रिंट हुआ। ठीक है, अभी इसी चीज को अगर मैं एरेज लेता था, अगर मैं एक एरे लेता हूँ, लेट्स टेक इन arr equals to, let's take a normal array 2, 4, 1, 6, like this. Yeah, I have taken the array now here. So अगर मुझे इस टाइम पे, अगर सपोज मुझे ये करना है सिक्स्थ एलिमेंट या फिर सेवंथ एलिमेंट, सेवंथ पोजीशन मेरे को कॉल करना है, इंडेक्स, सेवंथ इंडेक्स मुझे कॉल करना है, लेकिन यहाँ पे तो सेवंथ इंडेक्स है ही नहीं। इंडेक्स कितना है? 0, 1, 2 and 3. Till 3 we have the index here. We don't have seventh index here. But if I want to call the seventh index like this, suppose arr of 7, like this. So it will give us error. Yeah, it will give us error. Yes. Okay. Yes. If Yes, sir. Yes. if there is error, then we have to catch this error. Yes, sir. So we will catch this error by this exception, and we will give something to return, like we will print something. Yes, sir. Agar, Massive. yeah, some message, and you know what, even you can even print actually what the error is by giving e like this. Okay, now if you run this code, now if, okay, let me remove this portion. Now if I run this code, see, hi is coming, something is wrong coming there, because I have given this message something is wrong. Then this java.lang array index out of bond exception, this is the array index out of bond exception. How we got this portion? By using this e. Okay, because I am printing this e here, array index out of bond. ठीक है, अभी अगर मैं इस एक्सेप्शंस पे जाऊं, कहाँ, अच्छा, you know what, instead of this exception, you can write here array index out of bond exception also. Instead of this exception you can directly write array index out of bond exceptions. Okay, and one thing, suppose अभी इतना तो हम समझ गया कि अगर एक कुछ भी एरर रहा या कोई भी, अगर हमारे कुछ भी एरर आने की संभावना रही, तो हम उसे एक्सेप्ट, उसे हम ट्राई से हम चेक करेंगे, एंड देन कैच से कैच कर लेंगे।
है. अच्छा, एक चीज, suppose I am doing like this, inside try. Okay, saving it. Now I am printing this. Screen stuck हो गया. Is my screen is stuck? यस सर, रुक रुक कर दिख रहा है सर. Sorry, actually network issues are here, so can't do Yes. anything. Let me my connection. Might be it helps. Okay, now it's okay now. Little bit. Okay. So see, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? This is a array, a simple array. Okay, this is a simple array, and inside this try, what I am doing? First, I am just printing something. Okay, like inside try. Then I am having this system.out array. I am calling this seventh index. That we already know that it will be error. This will be error. Okay, so and I am catching it by array index out of bond. Okay, this is the error. Actually, this is the error. Array index out of bond is the error. Okay, and so if we do like this, running here, high is printing because yeah, just give me 1 minute. Just give me 1 minute. Okay, sir. Just give me 1 minute. Just give me 1 minute. Let me connect my phone Wi-Fi now. Now it's okay. Yes, sir. Am I audible to you all? Yes, sir. Yes. So Yes, sorry sir. for that. Actually, यस सर. network Yes. here network is very bad. Bangalore weather is very bad. That's the reason network is not good here. Okay, so now see what I have done here. I have print high. Okay, then I have an array. Then in the try block, I have given this print statement inside try. Then I know that I am calling this array of 7. It will give me the out of bond. Obviously, seventh index is not here in my array. So it will give me out of bond, and I am catching this array index out of bond with E, and I am something. I am writing something here. Something is there. Okay. Now what it's doing? First high is printing, then see inside try is printing, because before this I am having this. Suppose I am writing again like this, out, and let's make it
not print. Now if I am running the code, same thing will happen. Means high will print, inside try will print, this will print. But once this error occurs, it will break from here, and next line it will not print because it will break. It will break, and then as it was break, so it directly catch by the error index out of bound exception, and I will see this line now. And after that, obviously, if there is any error, then obviously after that, whatever the code we have, we will see this. Understand everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Everyone understand how we are Yes, sir. using try and catch? Yes, sir. Yes. So Yes, see, sir. now here what I have done, it might be, suppose it might be this is a try. Inside the try, I am having one exception, means one error. Might be I am having two errors. Okay, might be I am having two errors. Might be I am having three errors. Might be, we don't know. Okay, so for that I can catch multiple time here. I can catch multiple time. Suppose let's take the example of that one only, like where, okay, that division only. Let's take the example int I equals to, let's take 9, int j equals to 0. Here suppose I am doing, let's take int k equals to 0. I'm giving what, k equals to I divided by j. Okay, and let's make it 3 here for now. Okay, and now suppose inside this catch, after that, now I know this one will be the error. We know that this will be the error. So here I can give like this catch. Let's take exception e here sound, mm, something is not good. Save this, and let's print this e as well, so that we should get to know that what is actual error we are getting. So now if I run this code, and I need to put this one. Okay, and I'm giving here 0, and now I'm printing. Okay, now see, I got the exception, I got the arithmetic exception. I'm getting the arithmetic exceptions here. How we know that this line will create a error, and if this line is creating the error, so directly it will catch here. So see here one thing, you notice something is not good printed, not this array index out of bound. Okay, that means this one is a, what is this one is arithmetic exception, and this is out of bound exception. So in catch block we can give the multiple exceptions. Okay, and in this exception, suppose I am writing arithmetic exceptions of e. Now if I run this, it will give me the same, arithmetic exceptions only.
Now the thing is here, what I am doing, what actually what we are doing, what I am telling you, that see, exception having some types. Okay, we saw now one is a index out of bound exception. Okay, we saw an arithmetic exception. Okay, here if this exception is arithmetic exception, on that time this will catch and we will get the something is not good. If we got the out of bound exception, suppose I am changing it by 3. Okay, now if I run this code, now if I run this code, here I will get, see, array index out of bound exception. And what it will print, it will print something is wrong. See, something is wrong was printed. Okay, that means this Java, this already know that okay, this is the arithmetic exception, so we need to catch by arithmetic exceptions only. If I mentioned already this arithmetic exception here. Okay, if this one is a array out of bound exception, so in this time this array out of bound exceptions will be catched, and whatever the code, whatever the message we have given inside, that will print. Okay, सर अगर दोनों कैच में यदि एक्सेप्शन यूज करें तो क्या होगा? मतलब मतलब जैसे हमने एरे ऑफ इंडेक्स यूज किया है ऊपर और नीचे अरिथमेटिक एक्सेप्शन यूज किया है, हाँ, तो इनमें यदि दोनों को पेरेंट क्लास लगा दीजिए, जैसे एक्सेप्शन बस यूज करें एक्सेप्शन ई दोनों में, तो क्या आउटपुट आएगा? ओके, चेक करते हैं। अगर हम कैच कर रहे हैं एक्सेप्शन को ई के साथ, और अगर हम इसे करते हैं दिस इज एक्सेप्शन। ओके, अब देखो ये जो एक्सेप्शन है ना, ये एक पेरेंट है, और ये जो एरे ऑफ इंडेक्स है और ये जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, ये क्या है? ये है इनके ग्रैंड चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड जो भी बोल लो। ठीक है, अगर मैं इस एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन क्या करता है, ये एक्सेप्शन सारे चीजों को हैंडल करता है, हर एक चीज को हैंडल कर लेता है ये। ओके, दिस एक्सेप्शन इज अ पेरेंट एक्सेप्शन, so it will handle all the child, grandchild, it will handle all the exception. Suppose I am, what I am doing here, if I am cutting this and I am pasting it here. Okay, so on that moment what will happen here, on that moment what will happen, ये एक्सेप्शन तो सारी चीजें हैंडल कर रहा है, तो फिर ये एरे ऑफ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड और ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि ये एक्सेप्शन ही सारे, ये एरे ऑफ इंडेक्स भी हैंडल कर लेगा, ये सिंगल ये एक्सेप्शन ही अरिथमेटिक एक्सेप्शन को भी हैंडल कर लेगा। सो वी डोंट नीड टू गिव दिस एरे ऑफ इंडेक्स। ये चीज मैं, यही चीज बताने के लिए मैं तुम लोगों को ये एरे ऑफ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड बता रहा था। ओके, और कभी भी अगर, और जिस जैसे तुमने पूछा है कि अगर हमने ये एरे ऑफ इंडेक्स की जगह पे सिर्फ हमने एक्सेप्शन ले लिया, यस, एक्सेप्शन ले लिया, तो भी ये रन नहीं होगा। उसके पीछे का रीजन ये है, अगर ट्राई ब्लॉक में पहला अगर कुछ एरर आता है तो वो वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ये ब्रेक होगा तो ये पहला एक्सेप्शन ही कैच कर लेगा, ये कोड आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर ये कोड आगे बढ़ा ही नहीं तो हमें 2 एक्सेप्शन लिखने की जरूरत ही नहीं, इवन ये लेगा भी नहीं, एरर ही देखो आपको यहाँ पे एरर दिखा दे रहा है, यस है ना। तो अगर हमें पर्टिकुलरली हमें एक्सेप्शन हैंडल करना है, अगर हमें ऑलरेडी पता है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, तो उसे हमें स्टार्टिंग में ही लिखना पड़ेगा पहले। अगर हमने पहले कैच में अगर हमने एक्सेप्शन, नॉर्मल एक्सेप्शन पेरेंट क्लास दे दिया, तो फिर ये सारे जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, ये सब वैलिड ही नहीं रहेगा, बिकॉज ये सिंगल एक्सेप्शन ही ये सारी चीजों को हैंडल कर लेगा। तो जावा बोलेगा कि तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, तो तुम यूज क्यों कर रहे हो इस चीज को, क्योंकि और अगर हम यहाँ पे जैसे कि स्टार्टिंग में ही अगर कुछ एरर आता है, तो ये पहले ही स्टार्टिंग वाला ही कैच कर लेगा।
स्टार्टिंग जो एक्सेप्शन है वही कैच कर लेगा, और अगर कुछ एरर आया तो कोड तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो दो एक्सेप्शन आने का कोई चारा ही नहीं बनता है यहाँ पे। यस अंडरस्टैंड एवरीवन? समझा अभी? Yes, sir. क्यों हम इसको अरिथमेटिक एक्सेप्शंस यूज करते हैं, क्यों हम इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड यूज कर रहे हैं, वो भी स्टार्टिंग में यूज कर रहे हैं। हम चाहे तो एंड में भी यूज कर सकते हैं ना यहाँ पे। अब अगर ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, चलो इसे अगर हमने एरर यानी कि एरर कर दिया, अभी 0 देके ये एरर हो गया, तो अभी बताओ कहाँ जाएगा? अभी बताओ क्या प्रिंट होगा? अभी देखो ये कोड देखो अच्छे से, एवरीवन सी द कोड। सी I is 9, J is 0. We know that this is a error. That means after that this code will not work, this line will also not work. Now I am having here normal exception, and also I am having this arithmetic exception, because and I know that this is the arithmetic exception. I know that this is the arithmetic exception. Okay, and here also I have written arithmetic exception, but then also it will not work. See, red line is coming, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग वाला एक्सेप्शन है ये पेरेंट एक्सेप्शन है, यही कैच कर लेगा उसे, और आपको ये दिस इज एक्सेप्शन ही मिलेगा अगर हम रन करके देखोगे तो। सी अच्छा, 2 बार एक्सेप्शन हम यूज कर ही नहीं सकते पहली बात तो। चलो इसे भी रन करके देखते हैं अभी क्या होने वाला है। ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर एक्सेप्शन दे रहे हैं तो उसके बाद हमें ये सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। वी डोंट वांट इट। ओके एवरीवन, अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर ओके, चलो अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। I am giving you the question. Everyone try this first. सर एक प्रोग्राम में हम मल्टीपल ट्राई कैच ब्लॉक लगा करके भी अलग अलग एक्सेप्शन को हम हैंडल कर सकते हैं सेपरेटली। Sorry. सर एक प्रोग्राम के अंदर हम मल्टीपल ट्राई कैच ब्लॉक लगा करके भी हाँ एक्सेप्शन हाँ, अलग यस अलग यस, या डेफिनेटली एक प्रोग्राम के अंदर आप मल्टीपल एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हो, बिकॉज और हमें वैसे ही करना है ना। ये तो मैंने एज ए एग्जांपल के लिए दिया हुआ यहाँ पे। हम मल्टीपल ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगा के हम एक्सेप्शंस को हैंडल करेंगे, क्योंकि हर बार वो ट्राई करेगा। एक कोई कोड रहा, अगर समझ लीजिए पहले अगर एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि एक डेटाबेस से हम कुछ मंगा रहे हैं, कुछ गेट कर रहे हैं, वहां पे हम एक ट्राई लगा दिए। ओके, गेट होने के बाद उसे हम अगर किसी चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, पार्स कर रहे हैं, तभी हम और एक एक्सेप्शन लगा देंगे वहां पे भी। ठीक है, वहां पे भी हम एक ट्राई ब्लॉक बना देंगे कि ये भी ट्राई करो, अगर ये चीज कंप्लीट हो गया तो उसके बाद ये चीज ट्राई करो। ठीक है, चलो ये वाला प्रोग्राम सभी सॉल्व करो। राइट अ जावा प्रोग्राम टू टेक अ integer input from the users. Okay, use a try catch block to handle case where the user enter an invalid input. That means a non-integer value. On starting only I told you that if user is giving us a string, then what? Okay, so display a error message if the input is invalid. Come on everyone, try it. Okay, sir. Just try. At 12, then see if he's returning or not. Basically a power cut issue. Maybe, I think so. Cut out. It's okay, sir. It's okay. Yeah, so that question, everyone solve that question? Yes, sir. Yes, everyone done with that question? यस सर। Yes, See, the thing is, starting we will take a Yes, sir. scanner class. Then we have given the integer int array. After that, we will iterate with that array. Okay, that means for int I equals to 0,
I is less than numbers dot length or I plus plus. Okay, then we will print the number of I. Then now we have to try something. What we have to try? We have to try the index. As we have said that this scanner class, we have taken the scanner class. So we will iterate the index. We will check the index. Then we will see that if integer that integer index, and we have to give the number which index we want. If there is available, the index is available, then we have to print what system.out.println. We have to print the indices directly. Or else, if that index is not there, means that is out of bound, index out of bound. So directly we will catch that with the index out of bound, and then we can print any message that hey Java, this is index out of bound, or hey guest or user, you have given the wrong index, like this. Okay everyone, Yes, sir. सबको समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay then. Okay, so for today that's it, because I have a few more questions for you, but actually my system is not working now because the power cut. So that's the reason I can't able to join currently. Okay. So No problem. that's all for today from my side. Okay. Okay. So Yes, sir. okay then. Thank you so much. Thank you, ma'am. Okay, sir. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, sir. You Thank all you, are sir. Thank you, sir. audience. Really very great Thank you, audience. sir. Like, you all are very interactive, and so yeah, I liked it really.